Sir, what chapter is government intervention and the part of? Because I saw like the lectures aren't. या सो जहां तक माइक्रो इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात है, इट्स वेरी सिमिलर टू व्हाट यू ऑलरेडी डेल्ट विद इन एएस। एएस के अंदर गवर्नमेंट इंटरवेंशन के अंदर एक टैक्सेशन की बात होती है, एक मिनिमम मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन की बात होती है, कहीं एंड पे सब्सिडी की बात होती है। सो especially if you've not done AS के अंदर micro sites, today we'll try to, in our discussions, we'll do it in such a way कि it sort of like covers जो उसके अंदर AS के अंदर या O level में बच्चों को एक आइडिया होता है, तो उसकी जो nitty-gritties हैं, we're going to take a look at that. It's not so much in this question, honestly, even though नजर आ रहा है कि question के अंदर तो काफी discussion जो होना चाहिए वो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे ही है, obviously. But let's see. All right. So But there let's is go. no like separate chapter for it. There is sort of there is a separate chapter. Yeah, there is a sort of like a separate chapter. You'll probably see chapter number 8 or chapter number 9 के अंदर जो है गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो की बात lectures वहाँ से cover होगी. करूँ, right? The 8 and 9 chapter. Sure. Yeah. If All you right, sir. you might have to see कि उधर है भी कि नहीं है, because it usually sort of like हम बीच में blend in कर लेते हैं अपने lectures में. All right, so let's take a look at this. This one is saying monopoly restricts output to raise prices and exploit consumers. ये तो हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं that yes, they're doing that in comparison to obviously perfect competition. So we want to make a comparison to that. So with the help of diagram, assess the extent to which government should intervene in monopoly markets. तो हमारा most of the question, knowledge, understanding, and analysis is about monopoly and monopoly, how they, what are their features? They charge a higher price, they exploit consumers. What government policies can we use in order for them to stop doing that? And then also we want to talk about how those policies might not actually effectively work. They might be just fazul, you know. So that would be your evaluative point, basically, that how those policies would not work. Uh, so let's write. So the first thing we want to talk about is monopoly and its features. Okay, we've done it in previous essays also. So when we're writing about the features, make sure that you nicely, extensively explain something about that the type of their product is unique. So they have a unique good with no close substitutes. Okay. Then we have an idea, okay, how about in terms of buyers? So we say, bhai, there are many buyers, but single dominant seller. Sometimes we even say that there is only one seller, right? अब इन दो बातों में फर्क क्या है? Actually, the फर्क is when you say single seller, you mean to say that 100% of the market share is with one firm. 100% market share इनके पास है. But then when you say that there is a single dominant seller, what that means is, according to UK definition, that 25% market share or more is with one firm, okay? And rest of the shares is distributed between smaller firms. Okay? So एक के पास 25% है, बाकी के पास 5%, 6%, 8% इस तरह के हैं that they don't have the dominancy. If anybody asks कि market leader कौन है,
everyone unanimously is going to say कि भाई यही है बस और कोई भी नहीं है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये जो मोनोपोली होता है ये प्राइस मेकर होता है, राइट? दे सपोज टू बी प्राइस मेकर। व्हेन वी टॉक अबाउट कि ये प्राइस मेकर्स हैं, तो असल में द डिस्कशन इज के इनके पास इनका जो डिमांड कर्व है, एक तो नंबर वन बिकॉज दे आर अ यूनिक, they have a unique demand curve. They have a unique product, so they have their own demand curve. If you want, आप इसकी थोड़ी सी इलास्टिसिटी को जो है इन इलास्टिक साइड पे लेके जा सकते हैं इस तरह से, and you know that if they decide to produce this quantity, then they have the power to charge their own price. So if they decide on Q1, then they will decide their own price. So basically, price maker means that because of the uniqueness of their product, they have the ability to dictate, right, in the market कि क्या प्राइस के ऊपर वो सेल करने में इंटरेस्टेड है। दे विल डिसाइड द मार्केट। फिर उसके बाद one of the major important feature that we also talk about is how there are significant barriers. So we say that there are significant barriers to entry and exit, right? So obviously we have to elaborate on this point. What do we mean that there are significant barriers to entry and exit? That means when monopoly is in power, they have legal and strategic uh, methods to keep dominance, right? So in terms of like strategic could be their pricing strategy, um, सेटअप कॉस्ट हो सकती हैं, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगानी पड़ती है तो इसलिए हर कोई घुस भी नहीं सकता इसमें। लीगल के अंदर दे कैन बी पेटेंट्स राइट्स एंड थिंग्स लाइक दैट, जिसकी वजह से कंपटीशन जस्ट कैन नॉट एंटर दिस मार्केट, एटलीस्ट राइट नाउ दे कैन नॉट एंटर द मार्केट एंड स्टफ। तो ये हमारे पास कुछ फीचर्स भी हो जाते हैं इसके अंदर दैट दे वुड नॉट लेट अदर फर्म्स फ्रॉम कमिंग इन। अब जहां तक प्रॉफिटेबिलिटीज की बात है, वी डू मेंशन दैट whether it is short run or long run, usually they make abnormal profits, right? Usually they will make abnormal profits. Okay. In fact, in my previous essays also, if you notice, जब भी हम market structures की बात करते हैं, I find a way somehow किसी तरीके से efficiencies को fit in कर। I won't do it right now, but eventually हमारे discussion के अंदर I will go into and somehow I will find a way कि किसी तरीके से हमको जो है वो include करने की जरूरत होती है, ठीक है, efficiencies को। So in this question also I'll find a way कि किसी तरीके से हम efficiency को fit in करें। अब जहां तक बात है, the question is about how monopoly charges a higher prices and produces lower quantity and they sort of like exploit, ठीक है, consumers. So let's prove that yes, that's what they do, ठीक है। So उसके लिए हमें फिर डायग्राम बनाने होंगे। Let's do that. I think it's pretty basic standardized diagrams by now for us. Okay, so we have a demand curve, we have an MR curve, we have a marginal cost curve. These are our labels, right? A profit maximizing. So we must talk a little when we're explaining this diagram. I will go through this. That a profit maximizing, by the way, this is called an equilibrium point for a firm, for a monopoly, because a profit maximizing monopoly will always produce where MR is equals to MC, and then you have a marginal cost, something like this, and that's how they decide on the price.
फिर आपके पास एक एवरेज कॉस्ट बनाते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट रखते हैं, बिकॉज मैंने ऊपर लिखा है कि यूजली दे मेक एबनॉर्मल प्रॉफिट, सो लेट्स वर्क विद दैट, and they are making abnormal profits. Average revenue is higher, average cost is lower. So at QM, this is where profit maximizing is. तो आपने ये पूरी फिर इसकी obviously explanation करनी है. What I would do is also, I will make a comparison. Perfect competition के साथ, because perfect competition, if you remember, P equals to MC पे production करती है. तो ये एक अच्छा एक कंपैरिजन बन जाता है हमारे पास, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन के हिसाब से, वेयर डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई वाली बात. सो वी वुड राइट एन एक्सप्लेनेशन यहीं पे. आई थिंक या दिस इज द बेस्ट पॉइंट कि मैं अपनी एलोकेटिव एफिशिएंसी और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी और उसको भी सॉर्ट ऑफ लाइक फिट इन कर दूं इधर. सो so I would write something like that: monopolies main objective is to profit maximize and they produce where MR is equals to MC. Um, a monopoly faces a downward sloping demand curve. So its MR curve lies below average revenue, and we can see that average revenue से नीचे है. Um, so to add on, the price is determined by the demand curve at QM, that is PM. Since average revenue is greater than average cost, there is abnormal profit. Okay. अब मैं यहाँ पे एफिशिएंसीज को, आई वुड लाइक टू फिट इन दी एफिशिएंसीज वाला पार्ट. इफ यू रिमेंबर, एफिशिएंसी की जब हम बात करते हैं तो दे आर two main efficiencies that we talk about, the productive and the allocative. So यहाँ पे हम fit in करेंगे monopoly के केस में that they are experiencing allocative inefficiency. Okay, so I'll say something like that: allocative efficiency occurs where P is equals to MC, but at QM, price is greater than MC, therefore firm is making is operating at allocative inefficiency. Inefficiency. So it's allocatively inefficient. Okay, how about productive efficiency? Productive efficiency क्या होती है जब आप अपने average cost को minimize करते हैं. In our diagram, at this QM, we are not, right? So I will write that productive efficiency occurs where average cost is
minimum, but at QM, average cost is not at minimum. Therefore, firm is productively inefficient. Okay, something along this line. So, in fact, what we can do also is, हमारे diagram में, let's go into the diagram one more time and let's look at this thing which monopoly ends up doing. ये जो मैं रेड एरिया एक मार्क कर रहा हूँ, बेसिकली ये एक डेड वेट लॉस की सिचुएशन है, एंड वी डन दिस इन आवर लेक्चर्स एंड ऑल आल्सो, कि बेसिकली मोनोपलीज जो है, बाय प्रोड्यूसिंग लेसर क्वांटिटी and charging a higher price, they create this dead weight loss, which is considered a loss to the society. ठीक है, so this is one of the problems that we really want to have a discussion on. कि जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रहा है, कंज्यूमर सरप्लस भी लूज हो रहा है. आई कैन इवन लाइक इन माय डायग्राम आई कैन डू दिस एरिया 1 2 3 4 5 mark करके, and then in our write-up we can actually take this into consideration, that how consumer surplus is changing from 1 2 3 to just area 1, and they're losing 2 and 3. At least area 2 producers के पास चला जा रहा है because they're charging a higher price, लेकिन area 5 जो है, that is also getting created, and that is the negative side of this. ठीक है, so then my continuation of this can be, okay. So one of the things I would mention is जो ये सारी situation है under monopoly's case, and how I would say like monopoly restricts output and charges a higher price, resulting in lower choices, higher price, and loss of consumer surplus. So that's one thing that is definitely happening. Okay. Uh, Sorry about that. All right. So we have mentioned कि वो allocative inefficiency का एक problem है. Definitely there is an issue there. Um, फिर उसके बाद productive inefficiency also we've mentioned that it sort of like creates that. We have mentioned that we haven't mentioned, but I can say that as a result of allocative inefficiency, there is a dead weight
loss. Okay. Acha, we have to remember about monopolies that monopolies tend to make abnormal profits, right? अब वो जो abnormal profits होते हैं वो abnormal profits जो है वो ये monopolies यूज करती हैं टू अचीव डायनामिक एफिशिएंसी। डायनामिक एफिशिएंसी एक प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होती है जो लॉन्ग रन के अंदर फर्म्स को बेनिफिट देने में यूज होती हैं बेसिकली। तो उससे क्या होता है कि एवरेज कॉस्ट जो है वो बेसिकली ड्रॉप हो जाता है फ्यूचर के अंदर, क्योंकि जब वो रिसर्च डेवलपमेंट करते हैं या इनोवेशंस लेकर आते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव करते हैं लॉन्ग रन के अंदर, तो उनकी एवरेज कॉस्ट बेसिकली गिर जाती है। सो आई थिंक एट लीस्ट फॉर नाउ we've explained the whole monopoly and how they, yes, they charge a higher price, and yes, they produce lower quantity. Yes, they are exploiting consumer to a degree. ठीक है? But now we need to go towards the later part of the essay. Let me just fix this. This is slight lag. Okay. So now we want to move to the main agenda of the question, which is like government intervene करती है। तो गवर्नमेंट को क्या इंटरवीन, आई थिंक द क्वेश्चन इज क्या गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करनी चाहिए। द क्वेश्चन सेज असेस द एक्सटेंट टू व्हिच अ गवर्नमेंट शुड इंटरवीन इन मोनोपोली मार्केट्स। तो शुड, it should intervene, and then should not intervene would be your evaluation. तो should intervene के अंदर you have to suggest some ideas. So I would go something like governments may intervene to correct the undesirable outcomes associated with monopoly power. So these policies can include suggestion है policies के अंदर. Number one, there is a policy we could suggest is taxation. So taxation of monopoly profits, obviously. अब आइडिया क्या है, मोनोपलीज यही एक्सप्लॉयटेशन करके बेसिकली कंज्यूमर्स को हायर प्राइसेस चार्ज करके कम क्वांटिटी बना के एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रही है। तो इससे क्या हो सकता है कि दे मे हैव रिड्यूस्ड इंसेंटिव। सो हम लिखेंगे अ प्रॉफिट टैक्स कैन रिड्यूस abnormal profits. This may weaken monopoly power indirectly and redistribute. Obviously, we're assuming that we're gonna tax them and then we're gonna spend it on people. So उससे आपकी जो है redistribution हो जाएगी income की. Secondly, uh, we can have like something called an anti-trust, yes, slash competition policy. By the way, this competition policy is everywhere, all over the world. हर गवर्नमेंट करती है बिकॉज हर जगह मोनोपलीज को आप कर्टेल करते हैं। ठीक है। सो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट्स के पास एक डिपार्टमेंट होता है
जो कभी भी इवन लाइक पाकिस्तान के केस के अंदर लाइक फॉर एग्जांपल अगर बैंक्स के अंदर अभी रिसेंटली बैंक्स के अंदर मर्जर हुआ यूबीएल एंड सिल बैंक का तो बिफोर द मर्जर इज सपोज टू बी अलाउड firms have to go to these um, competition uh, committee and basically उनसे अप्रूवल लेना होता है इनको ठीक है so governments may force the monopoly to divest prevent mergers or allow new firms to enter the industry तो इससे क्या हो सकता है कि इससे जो है थोड़ी सी मोनोपलाइजेशन कम हो सकती है ठीक है अब एक पॉलिसी है जो Sir, I have a question. या Sir, when you say कि you'll the taxation on profit, you mean that as a the government would make a general policy, right? या ऑन मोनोपलीज नो नो Would नो but स्पेसिफिकली like मोनोपलीज के ऊपर they सिर्फ like we would write case on specifically like monopolies, right? Not other competitive companies that maybe यार अगर कंपटीशन है तो फिर वो मोनोपली नहीं है द होल आइडिया ऑफ मोनोपली इज दैट दे द ओनली वंस एंड दे मेकिंग क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी if there right. are other ones smaller ones and if they're not making so much money तो obviously वो फिर monopolies तो नहीं हुई sometimes you can Oh my introduce bad. profits like 10% extra on revenues which go beyond this level or profits which go beyond this level तो Right, जैसे right. हमारे अभी सुपर टैक्स है it's not on monopoly it's on the rate but since monopolies are like very significantly powerful तो उसकी वजह से जो है अभी सही है you know what at the end of the day ये लोग ही इस पूरे realm के अंदर आ जाएंगे Right. All right, sir. Thank you. ठीक है अच्छा other than this there are other policies also they can have policies like nationalization ये normally हर किसी पे नहीं हो सकता nationalization या state ownership this would actually mainly जो ये होती है ये कोई essential services के ऊपर होती है ठीक है they would not go and buy Facebook so if the monopoly provides an essential service like electricity, water, the government may take ownership to ensure equitable pricing. So government can come and they can suggest something called P equals to MCT pricing. Um, P equals pricing जैसा हमारे ऊपर उसमें भी जो डायग्राम है डायग्राम के अंदर नेचुरल मोनोपलीज के केस के अंदर गवर्नमेंट कैन इंटरवीन एंड दे कैन प्रपोज कि आप जो है P इक्वल्स टू MCT प्राइसिंग करें इसको आप मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग कहते हैं भाई let me show you on the diagram what marginal cost pricing does so this is our monopoly ka diagram they're making abnormal profits okay and the government intervenes and they say you're making way too much profits that's not good for the people especially and you're making allocative inefficiency because your price is up there marginal cost is down there allocatively inefficient so we would want you to produce more quantity we want you to go for marginal cost pricing which is P or MC का curve जहाँ intersect होता है marginal cost pricing what this means is कि इस pricing के ऊपर
द फर्म का ये जो एक डेड वेट लॉस क्रिएट हुआ है वो खत्म हो जाएगा, बिकॉज प्राइसेस नीचे आ जाएंगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी. तो obviously the monopolies will not be able to make abnormal profits anymore. That is one thing that is going on in this. तो ये एक आपके पास पॉलिसी जरूर इन हैंड है that you can sort of use. And usually ये again like I mentioned ये सिर्फ और सिर्फ essential उसमें करेंगी, otherwise they would not care for this. Uh, Another one policy that they have जो हम AS में पढ़ते हैं is something like a price regulation. You know how monopolies are producing less and charging a high price. So somehow, if we can intervene to protect the consumer, and we could suggest a maximum price. अब ये maximum price है क्या? Maximum price का मतलब है that this is the highest you can charge. And then wherever government feels that, you know what, this is an optimum price where, they should produce at, तो government can intervene and set up a price जिसके अंदर can be any price honestly, but at least उसमें consumer exploitation रोकने के लिए ये होगी. So we can write a government may impose a price ceiling कहते हैं, by the way another name for this is price ceiling, below the monopoly price. Example, at or near the competitive level. जो कि मैंने आई थिंक मेरे डायग्राम के अंदर क्या किया है, लेट मी टेक यू बैक टू द डायग्राम फॉर अ सेकंड. कैन ऑलवेज मेक अनदर डायग्राम नीचे. तो यू सी ये हमारा डायग्राम है, राइट? तो इस डायग्राम के अंदर क्या हो रहा है, मोनोपली पीएम और क्यूएम पे बना रहा है, और जो परफेक्ट कंपटीशन है वो पी इक्वल्स टू एम सी के ऊपर है. तो गवर्नमेंट बेसिकली क्या कर सकती है, मैक्सिमम प्राइस आके यहाँ नीचे लगा सकती है, यहाँ लगा सकती है. नॉर्मली दे वुड प्रेफर अ लेवल समथिंग लाइक दिस. तो उससे क्या होगा, प्राइस कैन नॉट गो अबव दिस लेवल, सो मोनोपलीज हैव टू प्रोड्यूस ओवर हियर वट एवर प्रॉब्ली दे विल प्रोड्यूस हियर. अगर आप यहाँ लगा लेते हैं, नीचे भी लगा सकते हो, नीचे भी लगा सकते हैं कि वो यहाँ पे, लेकिन ये फिर लॉस मेकिंग हो जाएगी, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. क्योंकि यहाँ अगर गवर्नमेंट पी मैक्सिमम लगा देती है ना, तो इसका मतलब है कि इससे ऊपर प्राइस नहीं जा सकती ऑफिशियली. तो बेस्ड ऑन द डिमांड द फर्म्स माइट बी इंटरेस्टेड इन प्रोड्यूसिंग देम दिस मच क्वांटिटी. ठीक है, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपकी एवरेज कॉस्ट ऊपर है और एवरेज रेवेन्यू नीचे है, तो आप तो एक्चुअली लॉस मेकिंग में चले जाएंगे. सो दैट माइट नॉट बी अ वेरी गुड आइडिया. लेकिन our purpose right now is they're charging a higher price, producing lower quantity, exploiting the consumers, and that needs to stop. So competitive level, like P price where perfect competition is basically charging the price. So this can reduce consumer exploitation and move output closer to the socially optimal level, something like that. So yeah, moving on. Um, these are some of the policies, right? इसके अलावा भी if you can think of any policies like what else can they do? लाइक फॉर एग्जाम्पल कंपटीशन को मार्केट में लाने के लिए उनको किसी किस्म की सब्सिडी दे देना, या जैसे पाकिस्तान के अंदर ऑटोमोबाइल के अंदर वी सॉर्ट ऑफ लाइक नॉट अ मोनोपोली बट एन ओलिगोपोली ऑफ द थ्री बिग फर्म्स. और मजीद फर्म्स को आने के लिए, स्पेशली जिस तरह से अभी इस वक्त हैं, गवर्नमेंट कैन इंसेंटिवाइज देम कि आपके लिए हम So इस साल टैक्स माफ कर देंगे एंड सो there can be public grants like
they can make a policy for any uh, company that's trying to get into the market to give them a federal grant. This happens in the US, I think. Yeah, yeah. So obviously, but the main Or, idea is that you want the competition to come in. Yeah, absolutely. right, yeah. ठीक है. So again, in one point we're saying कि जी government की intervention से this is what's going on. The exploitation is limiting, prices are falling, consumer surplus is rising, excellent, competition is happening, things are great. But then on the other side, you have to remember that government interventions जब होती हैं, so government interventions has um, limitations also. Okay, to what degree it can have an effect. Now, this is where we're going into the evaluation wala side. Like, I'm going to pick each and every policy that we've suggested, and we want to make a counter argument of. So, for example, if you're saying कि profit को taxation करते हैं, let's tax the profits. So, उसके ऊपर हमारी बात ये है कि it might actually disincentivize monopolies to innovate, invest in R&D, or improve efficiency, right? And one thing that we should always connect in monopoly के case with this thing is that if this thing is not happening, then basically what you're doing is you are reducing the dynamic efficiency का element जो long run में आपको फायदा पहुंचाता है, right? So reduced dynamic efficiency could harm long-term consumer welfare. So that's one negative side of taxation that you're gonna end up creating a disincentive. फिर उसके अलावा then you also have हमने और कौन सी लगाई थी we said um, nationalization we said yeah which one did we do next? Okay, so you want to have like a competition key policies and things like that, and you want the government regulations to government. Okay, so we can do like regulations can be costly for the government, requiring constant monitoring cost, prices, and behavior. Regulatory capture may occur if the regulators becomes too close to the monopoly. So what we're saying is basically आपने regulators लगाने पड़ेंगे अगर आप regulations लाए हो कि do P equals to MC की pricing, otherwise you know what, we're gonna penalize you, so you need to monitor them now. अब जब आपकी मॉनिटरिंग अगर सही नहीं होगी, हो सकता है कि आपके जो रेगुलेटर्स हैं वो मिल जाएं मोनोपोली के साथ और एक्चुअली वो आपको और मजीद फायदा पहुंचाने में इन्वॉल्व हो जाएं, तो फिर ऑब्वियसली इट्स अ बैड पॉलिसी
and consumer exploitation is not going anywhere. In fact, it's going to make things worse. तीसरी तरफ when you have those natural monopolies जो important industries होती हैं like the water networks हो गया या हमारे यहाँ electricity networks हो गए railway networks हो गए like electricity networks interventions to force competition may actually increase costs because duplicate infrastructure is inefficient. Now, what are we talking about here? देखिए जी नेचुरल मोनोपलीज हम किसको कहते हैं नेचुरल मोनोपलीज हम कहते हैं उन इंडस्ट्रीज को जिनके पास एक एडवांटेज ये होता है that no matter what they will have to be let alone because इनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इतना एक्सपेंसिव होता है कि दो फर्म्स ऐसी को एग्जिस्ट नहीं कर सकती Karachi Electric supplies electricity to all over Karachi. To supply electricity, you need major towers and wire networks and human labor and spaces in the city and PMTs and all of that in order to provide electricity to everyone. And now, if a competition comes, Karachi Electric is not going to allow them to use their infrastructure. They will have to make their own. They'll have to put their own lines. And that is the duplication of infrastructure that we're talking about. तो competition को लेकर आना natural monopolies के अंदर तो actually it is not in the interest of consumers, government, or from an economic theory point of view also. So it might not be a good idea. Other than that, even a simple idea ke, you want to break the monopolies and you want to bring in the competition. So remember that when you're like breaking up monopolies, it may reduce the ability of firms to benefit from economies of scale, raising average cost and ultimately higher prices. तो ऑब्वियसली फिर ये भी आपके फायदा नहीं है कि आपने गवर्नमेंट को लेकर आए बीच में आपने मोनोपलीज को ब्रेक किया मोनोपलीज को ब्रेक करने से फर्म्स जो है वो लार्ज स्केल ऑपरेशंस नहीं कर सक रही है तो उनको बल्क परचेजिंग का और जितने भी और मजीद एडवांटेजेस थे वो एडवांटेजेस बेसिकली दे लूजिंग आउट ऑन इट ठीक है जब हम एक मैक्सिमम प्राइस की बात करते हैं तो वी मस्ट टॉक अबाउट दैट आल्सो बिकॉज मैंने जितनी भी पॉलिसीज बताई है वी नीड टू काउंटर दोज पॉलिसीज तो जहां हमने मैक्सिमम प्राइस की बात की थी वी लर्नड इन एएस वन ऑफ द प्रॉब्लम इन मैक्सिमम प्राइस इज दैट इट creates surplus in the market there is an excess supply uh, right and black markets can arise as a result of that black markets black markets may arise and that can actually create a bigger problem because और ज्यादा high prices के ऊपर चीजें बिकेंगी और limited quantity में होंगी और आपका tax revenue lose होगा because if it's not selling in the main markets तो फिर उसकी वजह से जो है और मजीद negative situation create होगी
सो ये हमारा बेसिकली एक डिस्कशन है. फिर ऑब्वियसली यू हैव इवैल्यूएशन के बाद देयर इज अ मार्क और टू फॉर अ कंक्लूजन. Whatever we've written, conclusion needs to come up with like the final verdict. ठीक है कि government intervention to what extent, you know, can solve this problem. So let me just suggest a conclusion in the end, that something like the extent to which government should intervene depends on the source of monopoly power, the importance of the industry, and where the monopoly behaves in a socially inefficient manner. तो आप हर किसी को जाके नहीं लगाओगे, right? That's what we're trying to say here. Um, so in markets where there are high prices and low output and clear consumer exploitation, then strong interventions such as price regulations or competition policy may be justified. However, in industries where you have natural monopolies or require like large scale investment, so excessive intervention may actually reduce efficiency and innovation. So therefore, government should intervene selectively, combining regulations with incentives, ensuring that consumer welfare improves without destroying the potential benefits that monopoly power can offer. Because remember, monopoly is not always bad. They do sort of like give benefit to the society in terms of innovation. परफेक्ट कंपटीशन में क्या प्रॉब्लम होती है, बिकॉज फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं तो दे डोंट हैव द मनी टू इन्वेस्ट इनटू न्यू थिंग्स, न्यू वेज ऑफ production and things like that. So you rely on these oligopolies and monopolies कि वो अपने इंटरेस्ट में वो abnormal profits कमाने के लिए and then using the same abnormal profits for a much larger uh, benefit to the society, right?